वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए ये आपकी क्लास है कॉस्ट अकाउंटिंग की और आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, जैसे आपने सुना हो हिंदी में कहते हैं ठेका लेना। ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स के सबसे पहले हमें पता होता है कि एक्चुअल में हमें क्या काम करना है। ठीक है, और वो काम कितने में कोई भी जो ठेका लेगा, कॉन्ट्रैक्टर होगा, ठीक है, वो काम उस काम को वो पर्सन कितने एफर्ट के साथ, कितनी अमाउंट के साथ कर देगा, वो सारी चीजें इसमें आती है आपकी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग के लिए क्या होता है, हमारे पास फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट्स की हम बात करेंगे आज। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला जो हमारा फॉर्मेट है वो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो देखिए इस तरीके से वो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्या क्या चीजें आती हैं, किस तरीके से इसे क्रिएट किया जाता है, क्या फॉर्मेट है हमारा, उसके बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाना सीखेंगे। फॉर्मेट में कौन कौन सी चीजें हमारी आएंगी, किस तरीके से आएंगी, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। मैं जब हमारा ये क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम क्वेश्चन के थ्रू अपनी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले डेबिट साइड होती है हमारी। ठीक है, ये आपकी क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है आपका टू मटेरियल। टू साइड की बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो मटेरियल में क्या चीज आ रही है, फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल परचेज, डायरेक्ट मटेरियल परचेज। दूसरा आता है आपका इशू फ्रॉम स्टोर्स, और थर्ड आता है हमारा ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा सब चीजें 1 2 3 और बाहर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे टू वेजेस। अगर कोई आउटस्टैंडिंग है उसे ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड कर देंगे। ठीक है, वो आ जाएगा हमारा टू डायरेक्ट एक्सपेंस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो सारे ऐड होते चले जाएंगे। बाय साइड आ जाएंगे, बाय साइड आ जाएगा हमारा बाय मटेरियल। फर्स्ट आएगा रिटर्न टू सप्लायर। ठीक है, सेकेंड आ जाएगा रिटर्न टू स्टोर्स, और थर्ड आ जाएगा ट्रांसफर्ड टू अदर कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आ जाएगा सोल्ड, और नेक्स्ट आ जाएगा एट साइड या
इन हैंड, ये सारे आ जाएंगे, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से फिर आ जाएगा हमारा बाय प्लांट, वो पड़ जाएगा, ठीक है। और बाय प्लांट किस तरीके से, जैसे इसमें फर्स्ट है हमारा रिटर्न टू स्टोर, ठीक है, रिटर्न टू स्टोर, रिटर्न टू स्टोर के बाद आ जाएगा हमारा सेकंड ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट है थर्ड, अगर कोई सोल्ड कर दिया, और फोर्थ आ जाएगा एट साइड और इन हैंड, ठीक है। ये सारी चीजें पड़ जाएंगी बाय प्लांट में। ऐसे ही कहा जाएगा टू प्लांट, इसमें आ जाएगा फर्स्ट कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक प्लांट, cost of specific plant if used exclusively, cost of specific plant if used exclusively in contract, second आ जाएगा depreciation of plant if used in other contract, in other contract, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये बनना है। अभी हमारा और रह रहा है, ठीक है। तो ये है, सबसे पहले आ जाएगा मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल परचेज, सेकंड आएगा इशू फ्रॉम स्टोर्स, ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर आएगा आपका टू वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू प्लांट, कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक प्लांट इफ यूज्ड एक्सक्लूसिव इन कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट इफ यूज्ड इन अदर कॉन्ट्रैक्ट, बाय साइड आ जाएगा बाय मटेरियल, रिटर्न टू सप्लायर, रिटर्न टू स्टोर, ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, सोल्ड एट साइड इन हैंड, फिर आ जाएगा आपका बाय प्लांट, रिटर्न टू स्टोर, ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, सोल्ड एट साइड और इन हैंड। आगे आगे बात करते हैं आगे।
टू सब कॉन्ट्रैक्ट्स, टू सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका टू कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन, ठीक है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट, if contract is complete, or to work in progress account balancing figure, ठीक है। और टू बैलेंस CD if work certified is more than one fourth of contract, one fourth of contract price, ठीक है। ये आ जाएगी यहाँ खत्म हो जाएगा। फिर इधर आ जाएगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्स्ट इसमें आएगा मटेरियल लॉस स्टोलन और destroyed। सेकंड आएगा प्लांट लॉस स्टोलन और destroyed, ठीक है। और थर्ड आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मटेरियल। फिर आएगा आपका बाय कॉन्ट्रैक्ट की, बाय कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट contract price in case of contract price in case of contract price in case of completed contract plus एक्स्ट्रा वर्क प्राइस, ठीक है। ये आ जाएगा। और बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, इसमें आ जाएगा हमारा फर्स्ट वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और सेकंड आ जाएगा कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। यहाँ से हटा दीजिए या
तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा आपका दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें आगे से ही, ठीक है, नया कुछ नहीं बनाना। मेरे पास जगह नहीं तो मैंने वापस से हटा के दोबारा बनाया था। आपको क्या करना है, उसमें आगे से ही कंटिन्यू रखना है, ऐसे नीचे ऐसे नीचे, ठीक है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट और मटेरियल वो आ जाएगा। टू सब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, टू कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट, और टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और आ जाएगा टू बैलेंस सेलिंग इफ वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। फिर इधर आ जाएगा बाय साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मटेरियल लॉस स्टोरन नॉट एस्क्वायर्ड, प्लांट लॉस स्टोरन नॉट एस्क्वायर्ड, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मटेरियल, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इन केस ऑफ कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्राइस दर, एक्स्ट्रा प्राइस, और बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड फर्स्ट सर्टिफाइड ऑन कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आज हमने सीख लिया, ठीक है। कल से हम इसके क्वेश्चंस वगैरह, मतलब नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके क्वेश्चंस वगैरह करना शुरू कर देंगे, तो ये आपको और क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस के साथ हम बात करेंगे, तब तक के